Hello everyone, I'm Reena Mahajan. Welcome again to English Oasis. A very quick revision of the chapter proposal, the proposal. Hello 10th class. A very quick revision of the chapter, the proposal. पहले 2 मिनट में summary सुन लो and after that we'll do all the important questions also. This is a story of a landowner, Chubukov, एंड हिज डॉटर नतालिया. ठीक है, एक लैंड ओनर है चुबुकोव, उसकी एक डॉटर है नतालिया, राइट. और उनका एक नेबर है लोमोव, राइट. उनके बीच में बहुत अच्छे टर्म्स नहीं हैं. दे आर नेबर्स. लोमोव एंड चुबुकोव आर नेबर्स. दे आर नॉट एट वेरी गुड टर्म्स एंड Lomov comes, they have disputes about some property that is Oxen Meadows, right? Now Lomov comes to Chubukov's house and he says that I want to marry your daughter. And Chubukov is, wow, he's so impressed. Okay, my daughter is going to be married to a landowner and that is fine. And what is the reason? Why Lomov wants to marry नतालिया इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूमरस. बहुत हंसी आती है सुन के कि वो उससे क्यों शादी करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू मैरी नतालिया बिकॉज शी कीप्स द हाउस वेरी नीट एंड क्लीन. शी इज़ अ गुड हाउस कीपर एंड ही सेज दैट ओके शी विल मेंटेन माई हाउस ऑल्सो वेरी नाइसली एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू मैरी हर. शी इज़ अ परफेक्ट she is perfect to be married to, right? And Chubukov is overjoyed. And he goes inside and tells Natalia that somebody has come for you. And Natalia comes outside. She doesn't know about the proposal, right? Natalia को अभी कुछ नहीं पता कि उसने लोमोव ने उसको propose किया है. And she comes out and she has a dispute over Oxen Meadows with Lomov. Lomov के साथ उसके लड़ाई हो जाती है कि Oxen Meadows हमारा है और वो it is a piece of land. Right? And he says, no, it's mine. Our ancestors gave this piece of land to your ancestors for living. And Lomov बोलता है कि पेपर्स भी उसके लीगल पेपर्स भी मेरे पास हैं उस लैंड के. ठीक है, तुम्हें रहने के लिए दे दी, तुमने कब्जा ही कर लिया और उसके बाद तुम्हारी जनरेशन्स पे जनरेशन्स उस लैंड के ऊपर रह रही हैं एंड यू आर कॉलिंग इट योर ओन. एंड दे हैव अ फाइट एंड लोमोव goes out. Lomov को सांस फूल जाता है and he is not well and he goes out. इतने में चुबुकोव दोबारा आता है और नतालिया को बताता है that he had come to propose you, he wants to marry you. And Natalia is now overjoyed. Oh my God. And she runs and calls him back. ठीक है, इतने में लोमोव वापस आ जाता है and he says yes I want to marry you. लेकिन फिर से दोनों में एक लड़ाई हो जाती है regarding their dogs. ठीक है, कि मेरा डॉग बहुत अच्छा है एंड शी सेज नो मेरा डॉग बहुत अच्छा है एंड दे अगेन फाइट एंड इन द एंड चुबुकोव सेज ओके द मैरिज इज टू बी कंडक्टेड. मैरिज पक्की हो गई एंड द प्ले एंड्स हियर इटसेल्फ, राइट. सो दिस टाइप ऑफ मैरिज इज कॉल्ड अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, राइट. जहाँ हम दे डोंट हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, सिर्फ कन्वीनियंस देख रहे हैं कि हाँ मेरा घर संभाल लेगी आके और वो सोचती है कि लैंड हमारी हो जाएगी इस तरह से बिकॉज आई विल मैरी लोमोव. क्लियर? नाउ प्लीज बैक टू द चैप्टर. आई एम टेलिंग यू पर पेज के हिसाब से मैं आपको बताती जाती हूँ. आप अपनी प्लीज़ फर्स्ट स्लाइड बुक खोल लीजिए. दिस इज पेज नंबर 144. ऑन द फर्स्ट पेज इट इज़ दैट लोमोव कम्स और चुबुकोव को वो बोलता है कि आई हैव कम टू मैरी योर डॉटर. पहले उसको लगता है कि मेरे से मनी बोरो करने आया होगा लेकिन ही सेज नो आई हैव नॉट कम टू बोरो एनी मनी, इन फैक्ट इट्स योर डॉटर एंड आई वांट टू मैरी हर, राइट. इन द नेक्स्ट पेज 145 Chubukov continuously desires to see his daughter getting married to Lomov. वो कहते हैं कि मैं तो हमेशा से चाहता था कि लोमोव से शादी हो जाए मेरे डॉटर की and it's a great thing. Look at the last paragraph. The second line is the great thing is. So what is the great thing he is talking about? Lomov means the importance of making a decision about whether he would like to take Natalia as his bride or wait for an opportunity to find an ideal partner, right? Now come to page number 146. Why does he want to marry Natalia? Natalia से क्यों शादी करना चाहता है वो?
The very first two lines are the answer. Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated, right? So this is humorous also, that he wants to marry her just because of this reason, right? Now a very important line is, because मैं आपको मेन लाइन्स भी साथ साथ बता रही हूँ चैप्टर की, बिकॉज ये भी आ सकती हैं. एक लाइन दे दी, हु सेड टू whom in what context. ठीक है. सो प्लीज, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पेज 146. Go, there's a merchant come for his goods. A very important line. किसने बोली? It's you and Papa said. Okay. This is Chubukov went inside and told Natalia that go, there is a merchant to buy you your goods. Right? Basically what he wants, that somebody has come to marry you. Clear? Next. Come to page 147. The first paragraph, देखो, the Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. ठीक है. This is ironical also, क्योंकि उनके बीच में कभी भी अच्छे relationships नहीं रहे दोनों neighbors के बीच में, Lomov और Chubukov के बीच में, right? So Oxen Meadows is the dispute, right? And the second last paragraph of page 147, just see, this is a very important question. The dispute regarding Oxen Meadows. Oxen Meadows के बारे में क्या लड़ाई थी? ठीक है? See this one. But you can see from the documents honored Natalia, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. ठीक है. लोमोव बोलता है कि अब तो पेपर्स भी हैं मेरे पास, तो अब तो हर कोई बिलीव करता है कि वो मेरे ही हैं ऑक्सन मीडोज. एक टाइम था जब इसके बारे में कोई डिस्प्यूट था, अब तो है ही नहीं. देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर. लोमोव कहता है कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज इन परपेचुइटी टू द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर. तुम्हारे एंसेस्टर्स को मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने रहने के लिए ये ऑक्सन मीडोज नाम की जगह दे दी. ठीक है. इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर. और इसके बदले में वो ब्रिक्स बनाते थे उनके लिए. द पेजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ मैर फॉर 40 years. 40 years तक नताल्या तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं 40 years तक उस ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए थे. And had got into the habit of regarding them as their own. और अब वो ये समझते हैं कि वो उन्हीं की है ज़मीन. ठीक है. So because he has the papers of the this whole, तो अगर हमारा ओपिनियन पूछा जाएगा कि ऑक्सन मीडोज किसको बिलोंग करता है, तो we will say it belongs to Lomov, because legally also he has the papers and the property is in his name. Clear? Next page, page number 148. Last line देखो. Then you make out that I am a land grabber. ठीक है. लोमोव कहते हैं, ओ आई एम ए लैंड ग्रैबर. क्या मैं तुम्हें ज़मीन को हड़पने वाला लगता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़मीन हड़प गया? ठीक है. देन कम टू पेज नंबर देन कम टू पेज नंबर 150. 150 पे क्या होता है कि चुबुकोव उसको बोलता है कि यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, कि तुम इस तरह से अगर चिल्लाते रहोगे तो तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे. आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स. मुझे तुम्हारा तो कुछ चाहिए ही नहीं. एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव. लेकिन जो मेरा है वो भी मैं बिल्कुल भी नहीं सरेंडर करूँगा. राइट. और दोनों इस बात पे झगड़ रहे हैं. फिर नतालिया बोलती है कि पापा सेंड द मोवर्स टू द मीडोज एट वंस. वो बुलडोज़र भेज दो और जाके वो पूरी कटाई करके आएंगे वहाँ पे ऑक्सन मीडोज की. राइट. एंड लोमोव सेज आई विल टेक द मैटर टू द कोर्ट एंड देन आई विल शो यू. ठीक है. फिर क्या होता है? दिस इज पेज 151. ही सेज के नेवर माइंड अबाउट माई पीपल. लोमोव बोलता है कि द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, कि लोमोव्स तो हमेशा से बहुत ऑनरेबल रहे हैं. एंड नॉट वन हैज़ बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट इज़ फ्रॉड, कि हमारे ऊपर कभी भी फ्रॉड का कोई केस नहीं लगा. ठीक है. तुम लोग हमेशा फ्रॉड करते हो. राइट. एंड इस तरह से ही सेज, चुबुकोव कहता है कि मेरा जो लेफ्ट फुट है वो सो गया है और मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से. एंड नतालिया अगेन, Natalia and Chubukov, they are having a talk with each other. Next page is 152. 152 पे वो कहते हैं कि
Just look at this Chubukov's dialogue. This is the first, second, third, fourth, fifth, seventh, eighth dialogue. Oh, what a burden, Lord, to be the father of a grown-up daughter. ठीक है, अब वो कहते हैं कि ओ हो कितना बड़ा बर्डन है एक ग्रोन अप डॉटर के, मैं फादर हूँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, कितना परेशान हूँ मैं. राइट, इट्स अगेन ह्यूमरस. राइट, वाई? बिकॉज ही हैज़ टू फाइंड अ सूटेबल बॉय फॉर द मैरिज. ठीक है, अभी देखो नीचे एक डायलॉग है लोमोव का, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो ये क्यों बोलता है कि आई हैव डन इट बिकॉज ऑफ द रूल्स, माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल. वो कहते हैं कि रूल्स और प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, एथिक्स, उसके हिसाब से मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, लैंड का मेरे ऊपर कोई मायने नहीं रखता. क्लियर? एंड नाउ लोमोव एंड नतालिया बोथ आर टॉकिंग अबाउट देयर डॉग्स. ठीक है, अब फिर से लड़ाई हो जाती है इन दोनों के बीच में अबाउट देयर डॉग्स. राइट, एंड व्हाट डिड see how do Natalia and Lomov, it's a very important question that I'm telling you. How do Natalia and Lomov defend their dogs? अपने अपने डॉग्स को कैसे डिफेंड करते हैं? मेरा डॉग अच्छा है, मेरा डॉग अच्छा है, कैसे? Natalia and Lomov defend their respective dogs, Guess and Squeezer, by claiming their superiority over each other. Natalia claims that Squeezer was heaps better than Guess. Natalia का डॉग कौन है? Squeezer. और Guess किसका डॉग है? Lomov का. तो नतालिया बोलती है कि लॉट्स बेटर है मेरा डॉग तो तुम्हारे डॉग से. ही वॉज यंग एंड वॉज द बेस्ट पेडिग्री, अ थॉरोब्रेड एनिमल. नतालिया अपने डॉग के बारे में बोलती है. और लोमोव बोलता है, ही क्लेम्स दैट हिज डॉग गेस वॉज द वेरी बेस्ट एंड ही हैड पेड 125 रूबल्स टू बाय हिम. ठीक है, वो कहते हैं अरे इतना कॉस्टली है मेरा डॉग तो 125 रूबल्स का खरीद के लाया था, विच वॉज अ वेरी चीप अमाउंट फॉर अ फर्स्ट रेट डॉग लाइक गेस. सो बोथ ऑफ देम आर सेइंग माई डॉग इज बेटर, माई डॉग इज बेटर, और इस बात के ऊपर भी फाइट कर लेते हैं. सो द फर्स्ट फाइट वॉज ऑक्सन मीडोज, द सेकेंड फाइट इज अबाउट द डॉग्स. क्लियर? अब आगे देखो, कम टू दिस पेज नंबर 155. ठीक है, now she says that one more important question is what does she say about Lomov's hunting skill? लोमोव की हंटिंग स्किल्स के बारे में वो क्या कहती है? बहुत बड़ा कमेंट मार देती है कि तुम्हें तो हंटिंग आती ही नहीं है तुम. ठीक है, कैसे? इसके पॉइंट्स हैं, लोमोव फील्स नर्वस while arguing with Natalia and Chubukov about the superiority of their dogs. ठीक है, तो वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और नर्वस हो जाता है जब डॉग्स के लिए दोनों झगड़ रहे होते हैं. सेकेंड इज हिज फुट गोज नम, और उसका फुट भी नम हो जाता है. राइट, नंबर 3 इज नतालिया फील्स दैट लोमोव इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ फॉक्स हंटर. ठीक है, वो उसको बोलते हैं कि यू आर नॉट केपेबल, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम फॉक्स हंटर बन जाओ. एंड चुबुकोव सपोर्ट्स द आइडिया, वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम. राइट, नाउ कम्स द लास्ट पेज. Do you think that Natalia's and this Lomov's marriage is a marriage of convenience? It's a very important question. Do you think that their marriage is a marriage of convenience? We will say yes, it's a marriage of convenience when some specific purpose is planned to be gained through a marriage. Even the merits and demerits of bride and groom are overlooked. ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं या नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए एडिक्वेट हैं या नहीं, अप्रोप्रिएट मैच है या नहीं, ये सब चीज़ें सॉर्ट साइड में करके सिर्फ कन्वीनियंस की मैरिज देखी जाती है कि फ़ायदा किस किस को हो रहा है और कैसे हो रहा है. ठीक है, सो इट वॉज अ मैरिज ऑफ दैट सॉर्ट. क्लियर? उसको क्या फ़ायदा था लोमोव को? दैट नतालिया इज गोइंग टू मैरी हिम एंड शी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज हाउस, और वेल एजुकेटेड है, आगे जो है फैमिली भी अच्छे से चलेगी एंड ऑल. नतालिया को क्या फ़ायदा था? उसको लग रहा था कि ऑक्सन मीडोज अल्टीमेटली मेरा ही हो जाएगा अगर मैं मैरिज कर लेती हूँ लोमोव को, सारी लड़ाई ख़त्म. ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन हेयर इन द लास्ट पेज. वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन? चुबुकोव की लाइन है, दिस इज हिज डायलॉग, हु इज़ डेड सो ही इज़ माई वर्ड वाटर अ डॉक्टर. ठीक है, चुबुकोव कहते हैं अरे हु इज़ डेड, ही इज़ डेड बोलती है नतालिया, लेकिन वो कहते हैं हु इज़ डेड, वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन, वाई डज ही से सो? ही वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड बिकॉज
अगर लोमोव की डेथ हो जाएगी तो द ड्रीम ऑफ मैरिंग हिज डॉटर टू लोमोव वुड ऑल्सो बी फिनिश्ड, इसलिए वो कहते हैं इससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊं. क्लियर? सो एंड मोस्ट ऑफ द लाइन्स आई हैव एक्सप्लेन जो आ सकती हैं, प्लस character sketch is very important in this chapter. So I'll give you the main points of the character sketch, right? Please note down. Natalia के character sketch में we will use these lines. I'm just giving you the value points. Chubukov's daughter, well educated, good housekeeper, extremely egoistic, always wants to prove her point right. And come what may, कुछ भी हो जाए, ठीक है. And she is quarrelsome also, argumentative also, dominating, assertive, provocative. She is desperate to get married to Lomov. And in spite of Lomov's ill health, बीमार है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता. उसकी excitable nature है, हर वक्त लड़ने को तैयार रहता है, doesn't matter. But she wants to marry because he is wealthy and Oxen Meadows will be his. And she'll be the owner of the Oxen Meadows ultimately, right? So now the character sketch of Lomov. Please note down the value points for the character sketch of Lomov also and Chubukov also. For Lomov, please write suspicious landowner and well-to-do unmarried man wants to marry Natalia just because he wants a good housekeeper and that is why he wants to marry her. Does not consider Natalia to be ideally suited for her, right? But he is very practical, wants to marry, and he keeps on foolishly asserting the claim over Oxen Meadows. He says, no, Oxen Meadows are ours, right? And he does not even hesitate to hurl abuses at Chubukol family. ठीक है, उनको अब्यूज़ भी कर रहा है, लड़की का हाथ मांगने भी आया है, शादी भी करनी है नतालिया से, लेकिन उनको अब्यूज़ भी कर रहा है, उनके साथ लड़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, राइट? सो ही इज़ अ लिटिल बिट आउट ऑफ माइंड. हिज स्टबर्ननेस, इमेच्योरिटी जो है वो रुइन कर देते हैं द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द मैरिज. क्लियर? नाउ नतालियाज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. कम टू चुबुकोव्स. चुबुकोव के पॉइंट्स लिखो फटाफट. चुबुकोव इज़ अ वेल्दी बट ग्रीडी पर्सन, राइट? एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी ऑफ हिज डॉटर टू Natalia to Lomov just because he wants to get rid of the daughter and wants to get her married. शादी हो जाए उसकी और मेरी जिम्मेवारी ख़त्म, right? Responsibility अपनी ख़त्म करना चाहता है by marrying off his daughter. He's a short-tempered fellow and he's very good at in the art of pretense. Pretense मतलब प्रिटेंड कर रहा है कि अरे हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड वो हैं, नेबर्स हैं, हमारे टर्म्स तो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, मैं तो हमेशा से चाहता था कि मेरी डॉटर की शादी तुमसे हो जाए, हो ही नहीं, पता नहीं क्यों, व्हाटएवर. ठीक है. एंड इन द एंड with a bit of sanity he prevails upon him and he hurriedly makes the proposal materialize. ठीक है. अभी ढंग से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, बोलता है नो 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 द मैरिज शुड बी डन, शैम्पेन, राइट? So without the proper consent of Lomov and Natalia, उनका consent भी नहीं होता, फिर भी he wants to marry his daughter to Lomov. Clear? And please subscribe to the channel, like the video if you have liked it, and write in the comment section because comments में ही जो है वो आने के बाद कि please make a video on the proposal. It is this time, just a day before the exam, that I am making this video for you. So please, best of luck for your exams. पूरे marks score करके आना and please, please, please work more harder. Bye. Best of luck.